हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। मैं बहुत बढ़िया हूँ और होपफुली आप लोग भी बहुत बढ़िया होगे। तो आज हम वापस आ गए हैं। जैसा मैंने बोला था पिछली स्ट्रीम में, मैं मंडे को स्ट्रीम करूँगा। आज मंडे है और हम स्ट्रीम कर शुरू करते हैं। तो यार कुछ दिन के लिए मैं गायब था। मेरा एक ट्रिप का प्लान था, जयपुर गया हुआ था। मेरा एक व्लॉग चैनल भी है तो मोस्ट प्रॉब्ली अगले हफ्ते या उसके अगले हफ्ते हम जयपुर वाला व्लॉग डालेंगे। व्लोर इंडिया करके नाम है। मैं और रत्नेश जो आया था मेरे साथ स्ट्रीम में, हम दोनों लोग चलाते हैं उस चैनल को। तो बिल्कुल देखना, मज़ा आएगा। अभी फिर डायरेक्ट गेम पे चलते हैं। डेस्कटॉप ऑडियो शुरू करते हैं। अभी गेम का साउंड आने लगा होगा मोस्ट प्रॉब्ली। मैं चेक कर लेता हूँ एक बार। हाँ तो भाई गेम का साउंड आ रहा है आपको भी। सीधे चलते हैं, गेम रिकॉर्डिंग शुरू करते हैं अपनी स्ट्रीम। तो भाई मैं अपना हेडसेट पहन लेता हूँ फटाफट। हाँ यार, तो अभी हमारी जो स्ट्रीम थी, हमने काफ़ी सारी चीज़ें कंप्लीट करी थी। जो मेजर हमने क्वेस्ट कंप्लीट करी थी वो था बीस्ट क्लास। हम हिपोग्रिफ से मिले थे। एक हमने कई सारे हमने बहुत सारे वो भी पकड़े थे, बीस्ट वगैरह पकड़े थे। रूम ऑफ रिक्वायरमेंट में हमने एक चिड़ियाघर भी खोल लिया, मस्त था, एकदम मस्त। तो अभी मुझे को जो करना है ना, जल्दी जल्दी ना ये करते हैं। एक तो कंजुरेशन स्पेलक्राफ्ट सीखना है। दूसरा मैडम कगावास ये कर लेते हैं। मैडम कगावा का असाइनमेंट इजी लग रहा है। प्रैक्टिस फ्लाइंग नियर द स्पायर्स, फ्लाइंग नियर द कीन ब्रिज ब्रिज, ठीक है, कीन ब्रिज टावर। तो यही करते हैं। बैक चलेंगे, मैप पे चलेंगे। अरे यार दिल्ली में ना यार अतः गर्मी हो गई है, क्या बताऊं मैं। हद गर्मी हो गई है। मैंने अभी पंखा भी चला रखा है और टी शर्ट डाली हुई है यार, तब जाके मुझे बढ़िया लग रहा है। एसी वाला नहीं है अभी, लेकिन आप पंखे वाली तो आ गई है गर्मी। मस्त बैठते हैं अपनी ब्रूम पे फटाफट। अरे 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 अरे, ऐसे मत टकराओ यार। इधर जाना है ऊपर। जब से भाई गेम की अपडेट आई है ना, गेम इतना स्मूथ हो गया है, इतना स्मूथ हो गया कि भाई पूछो मत, कहीं नहीं अटक रहा। पहले जो शुरुआत के पहले हफ्ते में जो अटका था ना बिना अपडेट के, भाई साहब पूछो मत। अभी तो इतना सेक्सी हो गया है, सेक्सी चल रहा है। ओके हमें बहुत समय हो गया है तो हम ढंग से चला नहीं पा रहे हैं अभी। अरे 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 अरे, There we go. यहाँ पे हमारे पास Could it be a Merlin trial? मर्लिन ट्रायल है, इसको भी देख लेते हैं क्या करना है। वहां कुछ हुआ? ये क्या है भाई? कुछ तो करना है यहाँ पे। हरा हमारे पास है नहीं, मुझे लगता है यार ये इम्पीरियो वगैरह से ही होगा। ये हरे वाले जो है ना सारे, तो यहाँ पे भी वही है, सेम चीज़ है। कुछ करना है यहाँ पे। हरा आ रहा है तो हरा वाला स्पेल खुलता है ना, अवा कडाब्रा या फिर अवाडा कडाब्रा या फिर इम्पीरियो खुलेगा तो करेंगे।
ये नीचे क्यों जा रहा है? ये देखो, अच्छा इससे ऊपर नहीं जा सकते क्या? ये टॉप है, इससे ऊपर नहीं जा सकते शायद, इसलिए नीचे जा रहा था बार बार। नीचे भी है, मुझे लगता है यही तोड़ना है शायद। अरे रे रे मिस हो रहे हैं भाई, बहुत दिनों बाद खेल रहा हूँ। That's it. ठीक है, अरे एक और बचा है क्या? कुगावा कगावा, अच्छा हो गया, मीट कगावा। वापस उड़ के क्यों जाएंगे, हम जाएंगे मैप से फटाफट। कगावा को मिलना है हमें कहाँ? अच्छा ये तो सेबेस्टियन वाला है, हॉगवर्ट्स मैप। कगावा कहाँ मिलेगी? मैडम कगावा बाहर ही मिलेंगी हमें। तो भाई लोग, जैसा कि हमने देखा कि काफ़ी लोगों ने कंप्लीट कर लिया है। अरे मैडम कगावा से मिलना है भाई, मैडम कगावा का ऑफिस यही है। हेलो मिस्टर Welcome कगावा। back. Have you finished your... Reporting back, Professor. Assignment's all finished. Well done. Shows good discipline. Wisdom is a golden snitch, as they say. And you're proving a skilled seeker in that regard. Let us practice Arresto Momentum. A charm, incidentally, created to stop quaffles from plummeting straight to the ground during a Quidditch match. Precise, deliberate movements. अरेस्टो मोमेंटम। क्यों करना है ना इसको? ओह अच्छा, वी कैन स्टॉप अ मूविंग ऑब्जेक्ट। क्विडिच मैच में भी शायद मुझे लगता है हैरी पॉटर में यूज़ किया था, जब कोई गिर रहा था, नॉट श्योर कौन, हैरी गिर रहा था या कोई गिर रहा था, तो किसी प्रोफेसर ने अरेस्टो मोमेंटम करके उसको रोक लिया था वहाँ पे। तो अब तो मुझे नहीं याद है कौन गिर रहा था, Very good. लेकिन कोई तो था। I recommend you as much as possible. Perhaps before you leave here. अच्छा, इनका अरेस्टो मोमेंटम करना है। अरेस्टो मोमेंटम कहाँ गया, कहाँ गया, कहाँ गया? ये है क्या अरेस्टो मोमेंटम? यस, Arresto momentum. That's it. Keep it up. ओके कगावा। Professor, do you have a moment? Yes, what is it? You mentioned the Toyohashi Quidditch team. In class, I heard you mention the Toyohashi Quidditch team. I did. The Toyohashi Tengu are from Japan. Dominant, known for their rigorous training. They practice near the Mahutokoro School of Magic, often battling both tempestuous seas and violent storms, in addition to each other. Tournament play is almost always easier for the Tengu than their training sessions. I take it you're a fan. Fan? I was being groomed to play on their team. And I would have been a Tengu, if not for a bit of bad luck. Oh, If you were that good, I can't believe a bit of bad luck could end your entire Quidditch career. I was excellent.
My ability on a broom had nothing to do with what happened. I was betrayed by someone I trusted. Myself. I did not see clearly and I paid a dear price. Oh my My god. best friend Asuka and I were being groomed to play on the team together. I as keeper and she as chaser. She was breathtaking. She once corkscrewed through 3 players and scored before they even turned their heads. But as tryouts for the Tengu got closer, she panicked. I did not realize the extent of her panic until it was too late. She wanted so desperately for both of us to play together that she had slipped Felix Felicis into our tea before we were to show them our skills. ओह भाई ये कुछ डोपिंग कर दिया यार, डोपिंग वाला कुछ हो गया. पूछ लेते हैं, यही होगा, डोपिंग होगी कुछ. What is Felix Felicis? A potion? Also known as liquid luck. And it is illegal in all wizarding sports. I knew within minutes that something was different. I had never played so well. And Asuka was playing more beautifully than I had ever seen. When I confronted her afterwards, she admitted what she had done. I withdrew from consideration immediately. But it wasn't your fault. You didn't know about the potion in the tea. It does not matter. My flying that day was not my own. I could not live with myself. So, I withdrew and explained to them why. I burned my broom in disgrace. Oh, What भाई. happened to Asuka? Did she burn her broom as well? Asuka played for the Tengu for 2 seasons. You didn't report her. Tell them what she'd done. Her fate was not mine to decide. My fate is in my hands, as your fate is in yours. Thank you, Professor. I shall remember what you've told me. ओह ये लेवल 2 का लॉक है यार. लेवल 2 का लॉक हमें इस टाइम के हैग्रिड सिखाएंगे. मून सर, मून साहब सिखाएंगे हमें. मून साहब, मून साहब को पहले हमें कुछ कुछ ला के देना है. देखो ये रहा. रिटर्न डेमिगाइज मून देंगे तो हमें मिस्टर मून हमें वो देख सिखाएंगे. एलोहा मोरा पार्ट 2, एलोहा मोरा पार्ट 3. तो ये तो धीमे धीमे हो पाएगा. कॉन्जरिंग स्पेल सीख लेते हैं. ग्रो एंड हार्वेस्ट फ्लक्सवीड. फ्लक्सवीड के लिए पैसा चाहिए और सिरोना के पास चलते हैं. सिरोना से कॉन्जुरेशन स्पेलक्राफ्ट मिलेगा, राइट. तो सिरोना मिलेगी हमें 3 ब्रूम स्टिक में, जो कि यहाँ का पब है, और वो होगा हॉक्समीड में. इस वाले पे चलते हैं. हॉक्समीड डायरेक्ट. हमें थोड़ा सा एक वो भी सीखना है यार. Does it get बड़ा any more pot table cozy चाहिए. than Hogsmeade? No, it does not. Hello, Sirona. Glad you came. Hello, Sirona. I received your owl. How are you? Hello, my friend. Did you ever find Lodgog? We found it. I did, thank you. In fact, we're working together to try and rein in Ramrock. Are you? I suspected you and he would get along. Perhaps best I don't know details of your plans. And I shall refrain from telling you to be careful yet again. But I hope you will be. Of course. Your owl mentioned you're needing my help with something? I do. I thought you might be just the person to do a favour for my friend Dorothy Sprottle in Upper Hogsfield. I don't believe I've met Mrs. Sprottle. She's lovely. Her late husband Aidan was a friend of my father's. In fact, I'd stayed with Dot and Aidan the summers I waited tables here as a student. I've seen her a few times since Aidan passed, but the pub's been so busy lately, I've not been as attentive as I'd have liked. I wonder if you might pop in and see her. She may need some help collecting ingredients for her supply of Wiggenweld potion. And you could retrieve something of mine in the process. A box, full of old letters and such.
Why does Mrs. Sprottle keep a supply of Wiggenweld potion on hand? Dot's a skilled potioneer. Oh. She's been supplying travelling vendors with Wiggenweld potion. An ordinary precaution that has, unfortunately, become a necessity, what with Ranrock's loyalists disrupting the trade routes. अच्छा. Why did Mr. and Mrs. Sprottle have your box of letters after all this time? It's one of a few that I had when I was young. Dot found it when she was clearing out a closet. Can't imagine what's in there. Probably terribly theatrical. The ramblings of a teenage witch and her friends. You're welcome to take a peek inside, if you do find it. To be honest, I'd imagine it contains some lovely memories. Okay. I'll try to go and see her when I can. It would mean the world to me, and to Dorothy. Aiden was bringing the box of letters to me when he was taken ill. Dot can tell you where he might have dropped it. You'll अच्छा. find the hamlet just north of Hogsmeade. Okay. Please do give Dot my love. I will give her love. Not that way. भाई हट जाओ भाई, हमारे सामने से हट जाओ. अरे यार, यहाँ तो ब्रूम नहीं चल पाएगी. ऊपर से जाएंगे. पवन चक्की. Hogsmeade, here I come. यहाँ भी नहीं चल रही है. आ गई हमारे पास ब्रूम. अपर हॉग्समीड जाना है. हम शायद पहली बार जा रहे हैं अपर This place has हॉग्समीड. seen better days. डूलिंग फिस्ट कौन है? Hogwarts is very lucky they've got protection charms, if you ask. अच्छा बेटे, तुम लोगों रुको, तुम्हें बताते हैं. ये साले वो हैं पोचर. इनकी तो ऐसी तैसी कर देंगे. रुको. बम. इंसिंडियो भी रख लेते हैं. बम. और क्या रखें? लेवियोसो रख लेते हैं. थोड़ा सा उड़ाएंगे सालों. If it isn't Laura Treadwell's precious little guy. Thought we'd forget about it. This isn't a fair fight. Just how many... विगन व्हील पोशन मिला है, लेकिन हमारे पास वो नहीं है. अरे यार, हम हॉग्समीड आए हैं तो क्यों ना हम गियर बेच दें फटाफट जल्दी से. पहले अपना गियर हमारा सबसे खराब हुआ है यार, क्या ही बताएं. अरे ये बढ़ा रहा है हमारा. ये डिफेंस गिरा देगा लेकिन. हप 50. ये देख लेते हैं. हमने सब बेस्ट पहना हुआ है कि नहीं. यही पहना हुआ है, ठीक है. सब बेच देना है, मतलब सब बेच देना है. ब्रूम अपग्रेड. फटाफट चलते हैं और सब बेच देते हैं. पैसा मिल जाएगा अच्छा खासा. Revelio. अरे यार, कहाँ पे है?
ओ खाई है भाई। कहाँ पे हैं अभी? ये स्पोर्टिंग वाले पे भेज देते ना, सब बिक जाएगा। You're back. Nice to see you again. हेलो, हमें बेचना है सारी चीजें, खरीद लो। सेल। Nice doing business with you. बहुत मेहनत का काम है भाई। Thanks for stopping by. Hope to see you again. Sure, definitely we'll see you again. चलो। Sometimes it seems all roads lead to Hogsmeade. You're going out, bro. How can it lead to Hogsmeade? भाई है क्या है? कुछ तो है। चलो, let's go to Sarana's friend. Who lived here, I wonder? Upper Hogsfield. Now where to find Mrs. Sprottle? Bardolph Beaumont should have returned by now. Had by dark wizards he was. Excuse me, did you say something about a... Excuse me, did you say something about Bardolph Beaumont? I did. I don't think we've met. I'm Dorothy Sprottle. I was just worrying about Claire Beaumont's brother Bardolph. Only he's gone missing. Rumour is he was seen in the forest practicing dark magic. Saw him myself near some ruins with Rookwood's lot, I did. Oh, I fear he got himself into trouble with the Ashwinders, especially if he made them a promise he couldn't keep. I'd help search for him myself, but no one will risk encountering Ranrock's loyalists. They seem to be everywhere. Exactly. Why would Bardolph want to get involved with the Ashwinders? Oh, he had a terrible run-in with Ranrock's loyalists. Changed him. He vowed never to feel powerless again. I think he sought the Ashwinders out to learn their secrets. Victor Rookwood, at least, seems somehow immune to Ranrock's loyalists. What if doesn't want to? Do you think Bardolph may have simply run off? No. Bardolph's run that shop with Claire his entire life. He'd not give it up for anything. He swore he'd be back in a fortnight. My instincts are that he's been held captive or worse. Oh my God. पकड़ लिए भाई उसको. छोटे छोटे. I can certainly look out for him. Any help would be appreciated. You might speak to Claire first. Perhaps she has some insights that I don't. I can tell you that Bardolph was last seen in the forest wearing a particular woolen jumper, one that Claire knitted herself. अच्छा. Claire will be at her shop if you'd like to speak with her. Claire कहाँ है भाई? Claire, हम आ रहे हैं. ये शॉप क्लेयर की तो नहीं है? पहले क्लियर से बात करते हैं ना यार, ऐसे थोड़ी चलेगा. Upper Hogsfield. Now where to find Mrs. Sprottle? Ranrock's loyalists are a menace. What ये can we रही do? क्लियर.
Madame Beaumont, might I speak with you? Yes? What about? Mrs. Your Sprottle told husband. me a little about your Acha, brother's disappearance. Brother, bhai, brother, Oh, not husband. Dear Dorothy. She'd go looking for Bardolph herself if she could. She mentioned dark magic and even the Ashwinders. Despite my repeated warnings, Bardolph's been experimenting with dark magic near the edge of the forest. I thought perhaps he'd get it out of his system and it would gradually stop. But then one day, he didn't come home. Oh, Is there anything your brother took with him that might help to track him down? Only his satchel, journal, and a woolen jumper I knitted for him. That's all I can recall. chalo, I'll let you know if I see or hear anything about him. let's go find Thank him. you. How kind. I'd be so grateful to learn where he is. I know in my heart he's out there. Do be careful. I should be going now. Thank you. Let us go find his brother. अरे हम ढूंढ के लाएंगे, टेंशन कहाँ ले रहे हो यार? सिर्फ इसीलिए तो हम गेम खेल रहे हैं, सबको ढूंढ ढूंढ के लाएंगे हम. किसी का बच्चा, किसी का पति, किसी का अंकल, किसी का भाई. This अरे could भाई, prove dangerous if I'm not अरे careful. भाई, ये तो हम ही डरा दे रहा है यार. रुको, इसके पीछे वो चाहिए रहता है ना, इंसिंडियो पे लेंगे इसको. रुक साले रुक. Incendio! Confringo! Expelliarmus! Incendio! Confringo! Confringo! अरे Is that inferior? भैंस की आँख. That must भाई be कहाँ से आ रही है ये? Protego! Stupid one! Confringo! Incendio! Stupid one! Expelliarmus! Confringo! Incendio! अरे भागो. Defendo! Incendio! अरे भाई What really happened here? साला. अबे भाई ये तो खुद ही. ए भाई ये क्या कबाब बनेगी अपने आप ही जाके. अरे 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 हमारा बैग, हमारा बैग कैसे आएगा, कैसे आएगा, कैसे आएगा? अरे रुक जाओ बेटे बेटे, पकड़ लिए. Professor Howard will never believe this. जबरनॉल पकड़ लिया हम फटाक से. ये क्या है रे? Revelio. अच्छा यहाँ पे बक्सा है. लग्जरी क्रोक, पैसा, इधर भी कुछ है. ओके जर्नल मिला हमें उसके भाई का. I hate that I'm afraid, but there's no going back. I seem to have mastered 2 of the curses so far, but I have had to pledge to do their biddings if I am to learn more. Okay, 2 से ज़्यादा कर्स मिल गया और क्या चाहिए? I can't let them see my fear. They are already whispering behind my back. I've told not to trust dark wizards, but I can't stop until I have enough magic to protect Clara, myself, and all of Upper Hogwarts. Hogsfield. तो भाई बंदा तो सही लग रहा An है. entry from Bardolph's journal. He overheard whispers, a plan, something to do with him. Revelio. यहाँ कुछ है. Journal 2. I'm repulsed by what I have just witnessed. I have created an inferious. What is inferious? I'm not sure. अच्छा inferious are these corpses जो मुझसे लड़ रहे थे अभी, साले दौड़ा लिए थे. Corpse mutilated, come to life. I tried to hide my horror at what I have seen. Alas, I think
They saw through me. I need to convince them I'm not a spy. I'm not here to undermine them. If I do not, I fear I could be next. This mentions in theory. And something about it being Bardolph's turn next. तो मतलब बंदा डरा हुआ है थोड़ा बहुत. और कुछ है यहाँ पे जो हम डिस्कवर कर सकते हैं क्या? ये लाल सा बक्सा है. यहाँ भी कुछ नहीं है. Revelio. I don't think यहाँ कुछ है. चलो let us go. क्लेयर बेमोंट को बताते हैं उसके भाई के बारे में कि भाई तुम्हारा भैया जो है डरा हुआ है. Upper Hogsfield. Upper Hogsfield is being terrorised by Ranrock's loyalists. It's not right. Madam Beaumont, I do have some news of your brother. Oh, please tell me he's safe. हैं? मारेंगे तो. I'm afraid he's joined the Ashwinders and has no interest in returning. What? No, this can't be. He was seeking their advice, that's all. I'm truly sorry. I wish it had been better news. I wish you well, Madam Beaumont. What more could I have done? अरे यार. Oh, Bardolph. बेचारी को बता देते अगर कि मर गया है तो और दिक्कत हो जाती. Makes no sense. Nice to see you again, Mrs. Sprottle. Actually, Sirona Ryan asked if I'd come and see you. Oh, dear Sirona, a gem. Has been for as long as I've known her. She thought you might need help collecting ingredients for your Wiggenweld potion. And she's correct. My darling Aidan used to collect hawklumps for me. Since he died, my supply has dwindled. I'm sorry for your loss, Mrs. Sprottle. Oh, thank you. Love of my life. A bit lost without him. If you wouldn't mind gathering some hawklumps for me, I'd be happy to compensate you for your time. पैसा मिलेगा यार. I can बिल्कुल certainly करेंगे. try and find some for you. That would be wonderful. I'm worried about the travelling vendors and would love to get them more Wiggenweld potion. Sirona also mentioned that Mr. Sprottle was bringing her a box of letters when he fell ill. Indeed he was. I'd almost forgotten. I stumbled upon it just before Aidan died. He was hoping to go through it with Sirona over a butterbeer or two. Those two were always like two bowtruckles in a branch. Aidan took ill when he was collecting hawklumps on his way to see her. He made it home, but I fear he dropped the box in the cavern. The cavern is in the hills just southwest of our hamlet. You can gather hawklumps and collect the box of letters there. अच्छा. Sirona said she lived with you during the summers when she was at Hogwarts. What was she like? Goodness. Well, she was almost exactly like she is now. Charming, good head on her shoulders, taking care of everyone. I can't tell you the fun we had when she and her friends would visit us during the year, all buzzing about, practicing charms. Talented group. Her friend Mirabelle was a genius in the garden. Learned it all from her muggle parents, if you can believe it. Okay. Thank you, Mrs. Sprottle. Thank you. I'll be here if you are able to collect those hawklumps. I and the vendors I help would greatly appreciate it. अरे I will definitely find you some hawklumps. Revelio. Don't you worry. इनके घर में घुसते हैं पहले. बहुत कुछ रखे हैं. अरे I should investigate. इन्वेस्टिगेट. और ये बाहर है शायद. ओके ये बाहर है. यहाँ क्या है? अच्छा बाहर वाला बक्सा भी देख लेते हैं यार. 71 रुपया मिला है. Revelio. कौन बोला ये? Mine now, demi guys.
What do we have? Hello, Hamora. अरे भाई दरवाजा खोल दिया। यहाँ पे कोई डेमी गाइस था शायद। आई फील सो। Revelio. बहुत तेज आवाज आ रही थी इससे। बुककेस मिला है हमें, बुककेस। अरे इधर ही की तरफ और आ रही थी ना वो। अच्छा इसी की थी शायद, और नहीं है कुछ। अरे ये रहा ना डेमी गाइस। इसको कैसे पकड़ते इसको कैसे पकड़ते थे यार, मैं तो भूल गया। Revelio. Accio. ल्यूमोस करते थे क्या? Revelio. रात का समय भी है, कुछ तो करते थे यार। Lumos. Levioso. Lumos. भाई क्या करते थे Expelliarmus. भाई? मेरे किसी को याद है तो बताओ यार, हम तो भूल गए क्या करना होता था। Glacius. अच्छा एक्स दबा के कलेक्ट कर लेना था। भाई साहब इतनी देर से यहाँ था तो एक्स क्यों नहीं आया? हद है भाई, हद है। हद ही कर देते हैं भाई ये लोग। फाइंड द एंट्रेंस टू द केवन। चलो इनका केवन ढूंढते हैं। वो रहा। रात में यार हम ऐसे जा रहे हैं, कुछ तो पंगा लग रहा है। This must be the cavern Mrs. Sprottle went through. Expelliarmus. Careful. केयरफुल बताते हैं बेटा तुमको, केयरफुल। साला धरती तोड़ देंगे तुम्हारी। अरे अरे दो जगह नहीं भाई। You're the little son that saved Treadwell. Levioso. What have you done? Admirable trick. What I have done? I know all of it. Better not be. कहाँ चलेगा बेटे? उलट गया। अरे Nothing more than luck. Confringo. Expelliarmus. Try that Incendio. ये तो कोई और निकली भाई। You're finished. Expelliarmus. Levioso. Your juvenile tricks of फेल दिए। साला वुल्फ बन गई थी बे। Might I remind everyone, the wizard's sharpest tool is his mind. Perhaps best to shun that which leads it astray. इनको ही पेल दे क्या? अरे ऐसे ही मर गया।
Revelio. इसमें कुछ आ क्यों नहीं रहा है? कंसंट्रेशन, ये पता नहीं क्यों नहीं आ रहा भाई। चलो हॉर्क्लम फॉलो, हॉर्क्लम ढूंढेंगे सिरोना की दोस्त के लिए। कलेक्ट सिरोनाज लेटर और कलेक्ट लेटर बॉक्स और लेटर सब अलग अलग जगह पे है मुझे लगता है। और हॉर्क्लम दबा के Let's मिलेगा। have a look around. अरे See if I can भैंस find that की box of letters. ड्रॉप फेल दिए भाई। That's all the Hawklumps for now. Mrs. Sprottle should be pleased. अरे 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 भाई, पानी है यहाँ तो। हमको कुछ अच्छा नहीं लग रहा है पानी इतना। Incendio. मछली मर गई क्या? गायब तो हो गई? नहीं है। हॉर्क्लम, हॉर्क्लम, वे भैंस की आँख। भाई बैठ के हुए ये, भाई बैठ के मिल गई हैरी पॉटर में भैंस की आँख। कसम से भाई वही फील आ रहा, देख रहे हो? ऊपर से भी आएगा एक बंदा, I'm Batman। अरे अरे Expelliarmus. Incendio. Catapult. डिपल्स, डिपल्स से टूटेगा लेकिन। ये भाई क्या, पहले बैठ के की तरफ चलेंगे, वो तो शायद रास्ता है ही हमारा जाने का। भाई एकदम कसम से सेक्सी वही लग रहा है भाई, बैट केव। और जो बेन का प्रिजन था, मैं नाम भूल रहा हूँ, सेम वैसे से फील आ रही है। इधर से नीचे जा सकते हैं क्या? अरे भाई बहुत नीचे चले जाएंगे। मुझे लगता है इधर से ही रास्ता होगा नीचे जाने का। हॉर्क्लम, रिवेलियो, नीचे कुछ कुछ है। अरे भाई यहाँ से तो फिसलेंगे। ये Either I'll have to fight that अरे troll, भैंस की आँख। or avoid it altogether. अरे भागो! ए! Protego. ए! हरामी। Expelliarmus. Stupid one. अरे भैंस की आँख फेल दिया भाई। Expelliarmus. Protego. Stupid one. And Depulso. Expelliarmus. Protego. Incendio. अरे भैंस की आँख कैसे आ गया इतना आगे? That's- Expelliarmus. Protego. Expelliarmus. Protego. Stupid one. Expelliarmus. Protego. 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 Expelliarmus.
felt that in London. Hello. Horror clumps. भाई खतरनाक था भाई ये तो जो भी था ट्रोल भैंस की आंख Revelio. इधर कुछ ऊपर रह गया हमसे Incendio. चलो अभी के लिए आगे चलते हैं Revelio. ये भाई ये कुछ गिलहरी हैं वहां भी जाना है गिलहरियां हैं मुझे लगता है ये हार्मफुल है Revelio. Expelliarmus. Incendio. Capulso. डिपल्सो काम कर रहा है Revelio. वहां कैसे जाएंगे कूद जाऊंगे एक बार कूद जाऊंगा तो फिर वापस कैसे आएंगे कोई आइडिया नहीं अभी नहीं जाते हैं इधर से रास्ता है क्या ना भाई केव में ना अलग से फील होता है पता नहीं ओह लेटर मिल गया एक When I arrived here, I had a troubling sense that in many ways I wasn't like the other first years. I confess I worried that ये पूरी सिरोना की कहानी बताएगा पुरानी तो पढ़ लेते हैं कैरेक्टर बिल्ड है I worried that Hogwarts might not have been the proper place for me and pondering sending an owl to my parents asking them to fetch me almost before the every week of the class has ended. How did you know? I presume you are not secretly a legilimens. But I wonder that you seem to know my thoughts better than I did myself. That day in the 3 broomsticks, you spotted me huddled in a corner, staring blankly at the untouched butterbeer and an empty bit of parchment. My quill dripping in ink woefully onto the floor, and you came to sit with me. Well, I shall never forget it. I recall a sudden sense of relief as if someone had cast a levitation charm on me. When you told me about how nervous you have been come to Hogwarts, I looked at you and it seems beyond my imagination to think of you as anything but the confident, contented witch sitting before me. भाई दो चार वर्ड इधर उधर हो जाए तो माफ कर देना है ना In the days that followed, I marveled at how you charmed in the non-magical sense. I mean, everyone around you without apology, embracing who you were and what they were. It was as thought a scandal has flicked on. भाई कितने इसने वो दिए हुए हैं I realized that I could choose that path as well. Now that my school years are ending, the frightened first year, which I had been seeing words away. And I know it's because you saw yourself in that despairing creature in the corner of the pub and so generously extending yourself to hers. Mirabelle, okay, ये लेटर मीराबेल ने भेजा है. Oh, P.S. Tell Miss Sproudles that I still plan on visiting her and Mr. Sproudles whenever I can for the delightful conversation, and I'm ashamed to admit her incomparable cauldron cakes. I think सारे letters यही हैं. Dear Sirona, ये शेन ने लिखा है. शेन कौन है नहीं पता. I conjure this wee gift for you as a token of my gratitude. I stood on ground on my half during the Quidditch practice last week. I might have left the team altogether, and now we have won the Quidditch Cup. Ravenclaw House would not be the same without you. So Sirona was a Ravenclaw. Philomena. I sent a note separately to dear Mr. and Mrs. Brodel for their specially, but felt that need to put quill to parchment with my thanks to you as well. What a lovely respite from the castle. I won't soon forget how we giggled about the ridiculous genome. Did he truly believe that he was singing? And Mrs. Sproudle speak and kidney pie was simply glorious. Sorry, I shall be dreaming of it for days. I so appreciate you including me. I fear I was worn
I must warn you, however, that this does not mean I will go easy on you in the next week's match. You know that Ravenclaw is no match for all the Slytherin this year. Acha, this girl was from Slytherin, Philomena. I'm not sure who this is. अभी तक शायद नहीं आई है. This must be Sorona's box of letters. Box of letter भी मिल गया. ये Bess ने भेजा है. Who is Bess? Happy birthday, my dear friend. I sneak into the kitchens and ask Frinky. Frinky से हम मिले. Frinky was elf. Elf कह रहा हूँ. Dwarf. अरे Dobby जैसी. To make your favorite creamy cruddy. She was delighted to oblige. Not sure where she got raspberries at this time of the year. Genius, that Frinky. अरे भाई बहुत बड़े बड़े लेटर्स हैं. अच्छा ये स्प्रॉटल्स को लिखा है. Mother and father were delighted to hear that you and I had spent the afternoon at Glaria last Saturday. Truth to be told, I think my mother was so slightly envious. I shan't soon forget how heartily we laughed at my efforts to lace the bodice of my new dress. I challenge indeed, as in rather delicate practice of properly situation a hat pin without wondering either my hat or my head. But I adore everything that we selected and I have you to thank for now feeling like marvelously fashionable witch. भाई आज लग रहा है मुझे इंग्लिश अच्छी आती है. I was also a treat to dine at the Three Broomsticks without having to clear the tables. I shall own a place like that one day. Mark my words. भाई तुमने Three Broomsticks ही खरीद लिया है. I consider myself more than unlucky that you and Miss Sprottles agree to let me stay. I know that my parents will precisely the same way. You're absolutely Serona. ठीक है. I think that's everything. हाँ? Serona will be glad to have this back. Let's exit. Serona वाला हमारा मिशन कंप्लीट हो गया है. That is good. That is good. That is very good. Alright, Horklump यहाँ पे है. I should find Mrs. Sprottle. She'll be glad to get these Horklumps. चलो Horklump देना है हमें मिस Sprottles को. अरे 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 ये भाई क्या था ये? This looks intriguing. वहाँ पे कोई बैठा है. पहले ये भाई नीचे कुछ है. अरे 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 ये साले वो हैं भूतिए. Seems a pleasant enough little place. Hello, Mrs. Sprottle. I have good news. I was able to harvest some Horklumps for you, and I found Sorona's box of letters. Oh, thank you. How wonderful. The travelling vendors will be thrilled to replenish their stock of Wiggenweld potion. And Serona will be delighted to have those letters. How kind of you. Now you be careful heading back to Hogsmeade. क्यों? I should take this box of letters to Serona. कुछ होने वाला Be है क्या? glad to have it back. Why should I be careful? अरे यहाँ कुछ है. Warning, duck boy sighting, be careful. अरे duck boy को ये ऐसे की तैसे ही मार देंगे साले को. कहाँ है duck boy? Duck box, sorry. Duck boy बोल रहा हूँ. These But rocks have seen better days. ये रहा शायद duck bog. Duck bog टंग ले लेते हैं एक. Expelliarmus! Levioso! Incendio! Repulsor! Protego! Stupid! Expelliarmus! बॉग मार दिया है हमने. अरे यार एक तो हमको ये पसंद नहीं है यार. यहाँ साला उड़ के नहीं जा सकते यार. नहीं जा रहे भाई, उधर से नहीं जाएंगे. जिधर से पास पड़ेगा. हाँ घट रहा है देखो. Does it get any more cozy than Hogsmeade? घट रहा है.
यही है क्या 3 रूम 6? अरे छत पे आ गई यार 3 रूम 6 के। हेलो सरोना। Hello, Serona. I have good news. I was able to provide your friend Mrs. Sprottle with some hawk lumps for her Wiggenweld potion, and I found your box of letters. Oh, thank you. I knew you were the one to ask. अच्छा बात करनी है। अरे लेटर्स के बारे में क्या बात करनी है, हो गया हमारा। I'm glad I could be of help. Mrs. Sprottle sends her best. Don't know what I'd have done without her and Aidan. Thank you again for helping her and for returning this box of letters. It's nice to reflect on good memories. क्वेस्ट कंप्लीट। एक टैलेंट पॉइंट भी मिला है हमें। फटाफट दूसरी क्वेस्ट खोलते हैं। शैडो इन द स्टेट चले। फ्लक्सवीड के लिए हमें एक चीज चाहिए। क्यों ना एक फ्लक्सवीड उगा ही लिया जाए, हमारा एक मिशन कंप्लीट हो जाएगा। वो मिलेगा हमें यहाँ से। It's always nice to see a familiar face. थॉमस ब्राउन, हेलो। आई वॉन्ट अ फ्लक्सीड के लिए हमें चाहिए बड़ा पॉटिंग टेबल। हाँ पैसा बगा। मीडियम नहीं लार्ज चाहिए ब्रो, लार्ज। वेयर इज योर लार्ज टेबल ब्रो? T-shaped potion suited for all your potion brewing needs. 2 medium. Beast feeder spellcraft, beast toy box. beast feeder भी चाहिए लेकिन शॉपिंग स्टेशन। अरे भैया लार्ज एरा 3000 का भाई। Nothing like finding just the right thing, is there? सब लूट लिए, पैसा बचा ही नहीं मेरे पास। फाइंडिंग द राइट थिंग, पूरा लूट मारा भाई। ऐसा कोई करता है भला? पूरा लूट मारा भाई हमको, तो क्या बताएं। Alright, Deke, how are you? यहाँ पे क्या होगा है हमारा मैंड्रेक, नॉट ग्रास स्प्रिंग। एक बड़ा वाला चाहिए ना हमें, बड़ा वाला भी यहीं उगा लेते हैं। कॉन्जरिंग स्पेल चाहिए, राइट? कॉन्जरिंग स्पेल हमें चाहिए पौधा उगाने वाला लार्ज, मीडियम, लार्ज। और ये भैंस की आंख भाई। Deke thinks you should be proud of all the potions you've brewed. जगह ही कम पड़ गई ब्रो। अरे बस भाई, इतना नहीं करना है। फ्लक्सवीड, और यहाँ पे दूसरा हो गएगा श्रिवल फिग। चलो लेट्स गो टू अनदर एडवेंचर। कहाँ जाना है हमें? अरे मैप नहीं खोलना था ब्रो, हमें खोलना था क्वेस्ट। शैडो ग्रो एंड हार्वेस्ट फ्लक्सवीड। फ्लक्सवीड हो जाएगा अभी 12-15 मिनट में। मैन बिहाइंड द मून्स, ये तो हमें मिल ही नहीं रहा। भैंस की आंख, फ्लोटिंग टेंडल वाला। इन दी सेबेस्टियन का मेन क्वेस्ट करते हैं। सेबेस्टियन के पास चलेंगे, ठीक है? सेबेस्टियन के पास चलेंगे तो कैसे जाएंगे भाई? सब बहुत दूर जाना है हमको लग रहा है। ये ही वाला गेट सही रहेगा उतरने के लिए बाहर।
1700 मीटर। अरे हमसे पहला ही नहीं हुआ। हो गया। ये भाई हमारी फ्लाइंग स्किल को कुछ तो हो गया है। इतने दिन बाद खेल रहे हैं, शायद यही रीज़न है। 4-5 दिन बाद खेल रहा हूँ मैं, एंड मेरी फ्लाइंग स्किल इज़ नॉट गोइंग एज आई वुड से आई एम गुड एट फ्लाइंग। पहाड़ी के ऊपर ब्रो। अरे 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 चढ़ जाओ। यू कैन नॉट एंटर वाइल माउंटेड। ये भाई ये कुछ है भाई। कुछ तो है यहाँ पे। इस गेम में ना मेन क्वेस्ट और उन सब के अलावा भी बहुत कुछ है करने को। ये अपने आप ही नीचे जा रहा है क्योंकि अच्छा फेल्ड क्राफ्ट में आ गए हम। यहाँ क्या है भाई? सेबेस्टियन के पास चलते हैं। सेबेस्टियन ने हमें बुलाया है। अच्छा यहाँ भी नहीं जा सकते क्या? अरे यार हद कर दी भाई। कुछ तो है यहाँ पे। क्या है ये? कैसल है ब्रो, टूटा हुआ। अच्छा यहीं पे वेट करना है। You made it. Yes, I made it, bro. Enjoying the view? Keeping an eye on things. Feldcroft isn't what it used to be. No one has felt safe here since Ranrock's loyalists took a peculiar interest in that castle over there. Rookwood Castle. My uncle Solomon is a former Auror and refuses to look into it, even after Anne was cursed by one of them. Possibly with a wand, no less. I heard a goblin refer to wizard kind as wand carriers. Are goblins forbidden from carrying wands? Precisely. That's why I'm on the hunt for answers. If I'm to cure her, I need to understand what happened to her. Right. Anne was always the most mischievous of the three of us. Which is saying something, knowing me and ominous. I'm hoping a surprise visit from me and a new friend from Hogwarts will help lift her spirits. Bring back the Anne I used to know. Come on. I'll take you to my uncle's. Definitely, bro. I will help you. This way. Chalo, after you. Feldcroft used to be a lot livelier. With Ranrock's lot wandering about all the time, everyone stays out of sight. Here we are. My sister should be just inside. मम्मी चल जा, तुम नहीं जाओगे अंदर, तुम्हारा घर है। Aha! Sebastian, where did you... Is that what I think it is? We've been over this, boy. Hey. Shrivelfigs cannot reverse a curse. Nothing can. The sooner you accept that reality, the better. अरे But we haven't tried everything. There is no cure! When will you accept that? Never. I can never accept it. Now look what you've done. यार I'm sorry. Leave. यार वो हेल्प ही तो करना चाह रहा है।
I'm sorry you yes. had to see that. If you don't mind, I just need a moment alone. जाके बात Sebastian. करेंगे बात Not the करेंगे visit he'd hoped for. I'm sorry about earlier. Those bouts of pain are difficult to bear. no problem man let's talk to Anne. Are you all right, Anne? I didn't mean to intrude. You didn't, truly. And I'm all right. The pain from this curse comes in bouts, and often suddenly. It's not anyone's fault. It's nice to meet you, by the way. You must be the new 5th year Sebastian told me about. I am. Sebastian and I met during a rather lively duel in defense against the dark arts. Oh, dear Professor Hecat. She's a powerful witch. And she knows how to keep students like my brother and me in line. I do miss Hogwarts, but I wouldn't mind being in Feldcroft really if it wasn't so dreary now. Between the goblins at the castle and my uncle fighting with Sebastian whenever he's home, it's not the cozy retreat it once was. Sebastian mentioned something about your uncle being an ex-Auror, but refusing to go after Ranrock's loyalists. I must say, I wasn't prepared for him to be as angry as he was. Uncle Solomon is frustrated by what happened to me, and by Sebastian for thinking he can fix it. They both mean well, I know they do, but my uncle is right. This curse cannot be undone. It can be. I can feel it. Sebastian cannot take away my pain. Be optimistic. Perhaps you can help him to understand that. I'm afraid it's really up to Sebastian, and his mind seems to be made up. I can only hope he realizes the futility of his search for a cure soon. I'm getting tired. I should probably rest. Thank you for stopping by. अरे यार I wish you well. Thank you and Sebastian, this is my potion kit, not yours. Leave my things be. हैं? अच्छा ये कोई पुराना लेटर है. I think she is good at potioning. Dear Anne, Hogwarts isn't the same without you. Well, Sharp is still as foul. But you know what I mean. I hope you're feeling better. Sebastian. और यहाँ चेस्ट है, बाहर है, बाहर जाके ले लेंगे चेस्ट. भाई चलते हैं सेबेस्टियन के साथ एन के लिए कुछ क्योर ढूंढते हैं यार. आई होप होना That boy चाहिए. will fray my last nerve. अरे यार ऐसे मत बोलो. He's trying to Excuse help. me, Mr. Sallow. Oh, yes, Sebastian's friend. I apologize on behalf of my nephew. He Are? doesn't know when to stop. I was about to check on Anne. Did I see you come from the house? How is she? She's all right. She said she was going to rest. Nothing can be done for her. अरे ऐसा कैसे यार? It could be that you've not yet discovered the cure. Ah, you sound like Sebastian, thinking you know better than the healers at St. Mungo's. Perhaps the healers don't know everything, sir. Sebastian is single-mindedly focused on finding a way to help his sister. If there is a cure, he will find it. Your faith in Sebastian is misplaced. Some sort of dark magic cursed Anne, and the goblins aren't likely to explain themselves anytime soon. Giving her hope is cruel. The only thing to do now is keep Anne comfortable and stay out of the loyalists' way. ऐसे कैसे भाई? तुम ऑर्डर थे यार, कैसी बात कर रहे हो? With all due respect, sir, hope could keep Anne's spirits up. You may mean well, but I know what's best for Anne and Sebastian. They are my stubborn brother's children. Especially Sebastian. If you really want to be of help, you'll make sure Sebastian does what he should do, not what he wants to do. He's no idea the harm he could do if he doesn't stop. I hope you remember what I've said. Good day. I ought to see how Sebastian's faring. अरे यार Why will he not listen to me? गुस्से में है भाई She's लौंडा. my sister. How are you doing, Sebastian? You got a first-hand glance at what I'm dealing with. I apologize for my uncle. अरे no need to apologize. नहीं नहीं यार क्या बोले यार. ठीक है इसके साथ चलते हैं. सेबेस्टियन दोस्त है. He's trying to do what the. I'll admit, I wasn't expecting him to be so angry. No, वैसे He's गुस्सा ज़्यादा हो गया. always angry.
He's been angry since my parents died. After Anne was hurt, he only grew worse. It's as though he blames me somehow, always calling me my father's son, as if that's an insult. I'm the one trying to help her. He's simply given up. Both Anne and your uncle seem genuinely convinced that nothing more can be done for her. I refuse to believe that. Anne's pain is more than physical. It has changed her entirely. I miss my sister. And I'm going to get her back. Come with me. I need to show you where it happened. चलो कुछ traces Ranrock's मिलेंगे. loyalists are capable of so much more than people realize. They should not be underestimated. यार मुझे क्या लग रहा है ना कि एन नहीं इसके अंकल सेबेस्टियन के अंकल और इसके All the debris you'll see is from whatever's going on at that abandoned estate. Rebellion. They've been digging for something. they were not a good कुछ खराब था उनके बीच में तभी इसका अंकल सेबेस्टियन से ज़्यादा गुस्सा रहता है रेसिडेंट ऑफ फ्लैटक्रॉफ्ट समटाइम्स यूज दिस प्रैक्टिस टू प्रैक्टिस देयर स्पेल क्लास स्पेशली इन द लाइट ऑफ द रीसेंट गॉब्लिन अटैक अच्छा अरे अरे हम जा रहे हैं भाई ऐसे मत डराओ लाल लाल कर दिए पूरा भाई बेसिकली फेलक्रॉफ्ट में कुछ तो गड़बड़ हुआ है गॉब्लिन्स अटैक कर चुके हैं और गॉब्लिन्स ने Up there, on that plateau, is where they cursed Anne. This way. हाँ तो मैं बोल रहा था इनका कोई कैसल है उस पे उन्होंने टेक ओवर कर लिया है अरे शो स्लो dig through this rubble. Ranrock knows what It's an honor to be a part of it. Only good wizard is a dead wizard in my book. तेरी माँ का आगे जाके स्लो करना है ना स्लो कैसे करते थे हाउ कैन वी स्लो फोर्स है डिसेंडो इज गुड आई वुड लव डिसेंडो मारेंगे डिसेंडो दन 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 मजा आ जाएगा और ये क्या है एरेस्टो मोमेंटम ये भाई ये तो बहुत सेक्सी है अभी तो सीखा है एरेस्टो मोमेंटम भी यूज करेंगे मजा आ जाएगा चलो सेबेस्टियन लेट्स फाइट लॉन्च एनिमी इनटू इंडेस्ट्रक्टिबल ऑडिबल डिपल्सो अच्छा डिपल्सो भी यूज करना है तो एक काम करते हैं डिपल्सो भी यूज कर लेते हैं डिपल्सो इज दिस वन राइट डिपल्सो साले Rather unwise coming back this way. Let's get this over with. You don't know who you're playing with. There you are. I won't win. अरे गायब हो गया तेरी माँ का ऊपर से मारेगा कौन बचा है You are postponing me. I won't rest until you're dead. Ascendo. There we go. I hate that! You've made your last अरे भाई mistake. साहब how to slow I'm not sure how to slow Tired. अरे I'm not tired bro slow कैसे करते हैं एक्यो से फास्ट होगा लव इट चेंज
फ्रीज हो जाएगा. हाउ टू स्लो पीपल. नॉट श्योर हाउ टू स्लो. How nice of you to stop by. Put me down! Confringo! Descendo! This way. Let's get this over with. I won't bet. You will regret coming here. Stop it! साला पीछे से वार करता है. Descendo! Depulso! साला पीछे से वार करता है रे. You haven't had mushroom stew over here. आ रहे बेटा तुम्हारे पास भी नहीं है. What is happening? Descendo! Confringo! Little moon calf. Incendio! Finish him. Prepare to surrender then. Expelliarmus! Rodrigo! Stupid one! I confess, that was a bit more than I'd bargained for. I tried to warn you. Alright bro, टेंशन मत लो. I'm all good. मुझे वो मजा आया. Revelio! कुछ है तो नहीं यहाँ लूटने का. चलो. Let us grow. Incendio! कहाँ गया सेबेस्टियन? सेबेस्टियन ये रहा. Those loyalists deserved what they got. Couldn't agree more. This is where it happened. We smelled smoke in the middle of the night. When we looked outside, flames were shooting from the estate. Before my uncle and I could stop her, Anne rushed out, racing towards the fire, worried someone had been hurt. She came face to face with a horde of goblins, frantically trying to stamp out the flames. Suddenly, an icy voice drifted out from somewhere in the smoke. Children should be seen and not heard. A blinding blast followed. They didn't even give her a chance to run. अच्छा. It seems an awfully violent response to a child wandering by. What were they trying to hide? My thoughts exactly. It may be grasping at Billywigs, but I keep thinking that there might be something here that could lead me to whoever cursed Anne. Might be the only way to learn what type of magic harmed her, which could help me find a cure. Perhaps you're right. The Loyalists are everywhere, but they do seem to be spending a lot of time here, and it's likely they're hiding something. And at Rookwood Castle. Shall we have a look around? Yes. We shall go. They seem to have set up camp here for a specific reason. They have stations for everything. ये क्या है? Incendio! Whose home was this? Been abandoned long since I've lived here. Rumour was a Hogwarts professor lived here once, centuries ago. But that's all I ever heard. अच्छा. Revelio! कुछ खा न रहे सब. I've heard that goblin dig sites like these are popping up everywhere. कुछ खोद रहे It's a सब. wonder the Ministry isn't doing more. Always armed and ready for a fight, Ranrock's Loyalists. It might be worth taking a closer look at the house itself. House. जा रहे हैं. Let's go to the house. Sebastian बोला है कुछ मिलेगा वहाँ पे. Revelio! चेस्ट वगैरह तो है देखो अंदर. कुछ और हरामी भी है शायद साइड में. और ये सेबेस्टियन है. हम के साला कौन है? Sebastian,
Over here. Do you think that this was damaged by the fire the night that Anne was cursed? Could be. But it looks to me as though this was intentional. कुछ पका रहे हैं. Depulso. उधर से होगा. अच्छा, यहाँ जा ही नहीं सकते हैं शायद. यहाँ जाने के लिए उस पे कुछ करना पड़ेगा. Incendio. Expelliarmus. Depulso. कुछ तो होगा ये. एक्टिव करके देखते हैं. Accio. ये भाई कुछ तो है, बट क्या? विंगार्डियम लेवियोसा. Wingardium Leviosa. Glacius. Expelliarmus. Incendio. Revelio. Confringo. Levioso. Depulso. Accio. Expelliarmus. Descendo. अरे ये तो काम कर सकता है शायद. अच्छा, ये बाहर नहीं कर चला सकते ना. रिपेयरो चला के देखें. Reparo. हाँ, इसी पार्ट में कुछ ढूंढना है. बट हाउ कैन वी गो इन इफ वी कांट? अरे अरे कुछ. Levioso. Accio. Descendo. Levioso. अरे यार कैसे होगा? Depulso. Accio. Incendio. पूरा फूक देंगे. Depulso. Accio. Levioso. सेबेस्टियन, कुछ तो बोल मेरे भाई. Confringo. Depulso. Accio. Levioso. भाई क्या सीन है. अच्छा, तोड़ के देखेंगे एक बार. Defendo. रॉक्स ना टूट रही हैं ना फूट रही हैं. ये हम बाहर यूज नहीं कर सकते हैं. Arresto momentum. Glacius. भाई किसी को कुछ पता है तो कमेंट बॉक्स में डालो. मुझे तो समझ नहीं आ रहा क्या करना है. लेवियोसो भी करके देख लेते हैं. Wingardium Leviosa. Protego. Defendo. Arresto momentum.
भाई करना तो वही है, बट हाउ दैट इज, ब्रूम भी यूज नहीं कर सकते। अरे Revelio. क्या यहाँ पे कुछ है ऐसा? भाई कुछ तो है। This well looks familiar. Sebastian, I've seen this before. This house, the well, the view. What do you mean? Oh. When? Give me a moment. I'll explain in a second. ओह, क्या ये वही है हैमलेट है जो प्रोफेसर ने? ओके, यहीं से उसने ड्रॉट भगाया था, याद है? जो सबसे पहली हमें प्रोफेसर रेखम की वो मिली थी। अच्छा, शायद इसलिए नहीं खुल रहा था क्या? ये सारी चीजें इन्वेस्टिगेट नहीं करी थी। Arresto Momentum Guardian Leviosa. Convulso. Confringo. Accio. भैया हमारा तो सर दर्द हो गया, कैसे करें इसे? Sebastian, this house did belong to a Hogwarts professor hundreds of years ago. Who? What do you... I found a pensive that day in the restricted section with a memory Why? that showed this house. There was a little girl and a drought. The keepers have shown me other memories as well. The girl became a Hogwarts professor. Her name was Isadora Morganach. She was one of the keepers. The keepers? Like in Quidditch? And you found a pensive in the library? I'm not following you. I realize it's a lot to take in. I'm not even sure I understand it all yet. And no, not like Quidditch. They call themselves keepers because they're protecting some type of knowledge. It has to do with the vault at Gringotts. Let me see if I've got this straight. You have Ranrock and Rookwood after you because of something you found at Gringotts where you ended up via a port key. You can see traces of an ancient magic that you think Ranrock is trying to harness. And now you've been witnessing memories left by keepers. Oh, and this house belonged to a Hogwarts professor who was one of these non-Quidditch keepers hundreds of years ago. If I didn't know you, I'd think you were pulling my leg. It is all a bit much, isn't it, when you put it like that? The point is, we both have good reason to search this house. You for answers about what happened to Anne, and me for answers about the keepers. भाई पता है, Look at this. ये Someone piled this here for a reason. इसलिए Is नहीं it खुल रहा blocking था। something? Only one way to find out. डिपल्सो से चला जाएगा ये। Confringo. लो कन्फ्रिंगो से ही चला गया। भाई हद है। Huh, a stairwell. Why bother blocking a stairwell? There might be boy. something here worth a closer look. They've left all of this simply strewn Hooray. about. Revelio. Tells me. यहाँ तो भाई खतरनाक लोग हैं। Lumos. आ जाओ सेबेस्टियन। सेबेस्टियन आगे चला गया क्या? ये भाई ये कुछ इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये मेन स्टोरी का पार्ट है। It is my second week in the camp. More arrive each day. The Muggle doctor and even some of our own healers are doing all that they can for them. The grief is palpable. The ones who have survived the plague are forever damaged by their loss. कुछ plague के बारे में बात हो रही है। A fever may pass, the skin may mend and scar, but the devastating sorrow remains. I saw a man much like my father who had lost a child. I couldn't bear it. I longed to give him some shred of relief. I'm beginning to think that the others are wrong. I have the power to help these souls. It seems as arbitrary not to help them as it would be rid of their torment. A journal entry of Isadora's. Oh, I should hold on to this. Isadora की journal entry है। अब क्या करें ब्रो?
अच्छा, और भी हैं. I traveled here to learn, but I long to help. My internal struggle is overwhelming. It's as though the magic wants to heal, and I'm the one preventing it from doing so. Should I lose hope? Will I forget regret not having done more? I cannot look into the eyes knowing that I could lessen the burden of a heartache. I saw the man leaving the camp today, the one who reminded me of my father. Surely I wouldn't hurt to help him. I could further my research, of course, but that would be a fortuitous, bhai sahab, consequence of doing something good with this ability. यार ये ब्रिटिश हॉगवर्ट्स जब ब्रिटिश जगह पे प्लेस है तो इनके वर्ड्स ऐसे ही होते हैं. ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी जाले. Seems these journal entries are from Isadora's travels. And I believe Isadora is our culprit. Everything behind this. Explore this. Revelio. Lumos. हटो पीछे हटो. अरे हट जाओ भाई. Confringo. Lumos. अरे Confringo. Lumos. आ जाओ. You're not going to believe this. I can see the Undercroft. What? A daydream? Because that happens to me too. I know it sounds strange, but... Honestly, nothing you say sounds strange to me anymore. Fair enough. I can see the Undercroft through this stone wall, as though it's a window. This has happened before. I'm listening. I think it's to do with my ability to see traces of ancient magic. But you said you didn't really understand it, and that you couldn't wield it. That's true. And I'm still not sure what it all means. What I do know is that my ability allows me to travel through these windows I see. Wait. We can get straight to the Undercroft from here. Ominous will be flawed. We can. But perhaps best not to tell anyone else about this for now. Even Ominous. Understood. Well then, invisible, secret, ancient magic passageway? Here we come. Let us go. I'm tempted to hold my breath. Enter. सीधे अंडरक्रॉफ्ट पहुंचेंगे. लेकिन इसका मतलब क्या हुआ भाई? हम फेल्थक्रॉफ्ट से सीधे अंडरक्रॉफ्ट पहुंच गए, तो कुछ तो कनेक्शन है. स्लिदरिन. Why would the door lead us here? Sebastian, look. Oh. Undercroft has some kind of door too. Nice. Very nice. Uh-oh. Why hide a triptych here? Seems as if something's missing. Some sort of... Let's have a look. Some sort of ruined diagram. ये collect करना होगा, I guess, मुझे लगता है. Anything helpful in the note? Nope. A rune symbol. I've seen similar symbols used by the keepers. I've been thinking. A keeper lived in that house centuries ago, and Ranrock and his lot have been searching there. You said that goblins may be wielding some form of this ancient magic. Do you think Anne was cursed by ancient magic? I can't be sure, of course, but I don't think so. I didn't see any traces of it around your sister. Oh, nice. Very well. But that doesn't mean it's not ancient magic. There's still so much we don't know about it. True. Perhaps this triptych will lead us to answers. Then we'll have to unravel what this all means. But now I need to see Ominous. Don't worry, I won't tell him anything. Did I mention that, apparently, Salazar Slytherin had a secret scriptorium here in Hogwarts? You did not? Sounds worth looking into. Any idea where in the castle? No idea. Ominous just learned of it. I'll let you know what I find out. I had no idea our visit to Sian would unfold into all of this.
My head's an utter mess. But I'm glad you told me everything you did. I'll be in touch. Till then. मतलब भैया कुछ तो है। ये सारे लोग कुछ ना कुछ ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं और हमें पता नहीं है क्या। कुछ तो ये एशियन मैजिक से रिलेटेड गॉब्लिन्स ढूंढ रहे हैं भाई, जो हमने अभी ढूंढ लिया रूइन मैप। मुझे लगता है कई सारा near the ruins of Falbutton Castle. After dark. Do not tell anyone. Okay, I won't tell. Brilliant. ठीक है। अपने प्यारे प्यारे उनसे भी मिल लेते हैं। अरे ब्रो, अरे रुक जाओ भाई, तुमको कुछ खिला दें। रुक जाओ, ब्रश कर देते हैं, तुमको कुछ खिला देते हैं। जबरनल कहाँ गया? अरे रुक जा जबरनल। अरे चलो बच्चों, हम तुमको मिलते हैं थोड़े समय बाद, ठीक है? अरे I'll look after you. हमें इनको बाहर निकालना है ब्रो।
चलो लेट्स गो। सबको खिला पिला दिए मस्त। You should be proud of all the potions you've brewed. ओके मैं पोशन बचा हुआ है कुछ। और हम मुझे लगता है मेरा मिशन कंप्लीट हो गया वो क्वेस्ट। प्रोफेसर गार्लिक प्रोफेसर गार्लिक बस फ्लिपेंडो सीख लेते हैं फटाफट। कहाँ जाना है? प्रोफेसर गार्लिक हमारे हर्बोलॉजी की टीचर हैं। हर्बोलॉजी प्रोफेसर गार्लिक बहुत दूर है। प्रोफेसर गार्लिक इतनी दूर है तो हम पैदल क्यों जा रहे हैं भाई? अरे भाई साहब प्रोफेसर गार्लिक एकदम यहाँ पे हैं। अरे नहीं सीधे जाएंगे हर्बोलॉजी क्लास में। पिंक ट्री के पास प्यारा सा पिंक ट्री है यहाँ पे। You can't imagine how inconvenient travel was before I invented flu powder. तब प्यारा पिंक ट्री है वो। चलते हैं फटाफट। अरे यार हॉगवर्ट्स के अंदर वो नहीं कर सकते हैं। प्रोफेसर गार्लिक I've finished the activities you assigned me, Professor Garlick. Show me how to do flipendo. Wonderful. I hope you gained a greater appreciation for the flora in our lives. I am forever enraptured by it. Just yesterday, I spent hours pruning my self-fertilizing shrubs and flutterby bushes. Didn't realize how long I'd been at it until the sun began to set. Well, if there's one thing I love to see more than my plants thriving, it's one of my students doing the same. Now, ready to learn flipendo? Yes. Chin up, keep a light grip, and it's all in the wrist. Let's see you give it a go. ये टीचर बड़ी खुश रहती है, वो प्यारी टीचर है। Focus with this spell. Nothing as mortifying as knocking back a colleague when all you wanted to do was move a few pots. सीख गया फ्लिपेंडो। टन टन टन। Wonderfully done. If you'd like to practice a bit more, to do so here at the house. Just mind the plants, please. अरे I will mind the plants. Professor, I was wondering where you're from. What's your background? Oh, how nice of you to ask. Well, let's see. I grew up in London, right on the Thames. London? That sounds lovely. All the sights and bustle of a city. To some, yes. I used to dream of living in the country, but it wasn't until I came to Hogwarts that I felt truly at home. Mind you, it did take some time, and whilst it is my fervent hope that each student eventually feels as at home here as I do, it is not always the case. I suppose that makes sense. Well, we each bloom differently, don't we? Some of us, like Devil's Snare, thrive in the shadows, whilst others crave the attention of a bouncing bulb. And we each grow and thrive according to our own plan. Oh, I was terribly nervous when I arrived at the castle. You see, as a child, I knew nothing of witches or wizards. You can imagine how astonished I was to receive my letter from Hogwarts. I spent a good deal of time alone in either the greenhouse or the library my first days here. Sure. It does take a while to adjust to being here. Precisely, and I was remarkably fortunate. In fact, a 7th year took me under her wing during those first days. She remains one of my dearest friends. Was it Serona Ryan? It was indeed. How on earth did you know that? Serona has been a good friend to me as well. In fact, I retrieved a box of letters from Mrs. Sprottle for her. Oh, darling Mrs. Sprottle. She was always astonished I knew as much magic as I did, being Muggle-born. So I dare say you'll find that the friends you make here at Hogwarts will last a lifetime. Now, I'd best get to my recent delivery from the Magic Neep. Mr. Teasdale promised me quite an assortment of seeds this week. Lovely to see you. It's always to see
It's always lovely to see you, Miss Garlic. The first will comparing discipline violent charms is ठीक है. Now let's go to quest. Hi keep. नेटी से मिला. नेटी ने बोला है रात को आना, किसी को बताना नहीं है. रात को जाऊंगा मैं. Also attend astronomy class. Professor Shah is at the top of the astronomy straight in the entrance of the room. Required to guide there now. ठीक है. Meet Netty after dark. Prepare for the search for the final keeper. सेबेस्टियन और ओमिनस लड़ रहे हैं. ये तो मजेदार होगा. देख के आते हैं किस बात पे लड़ रहे हैं ये लोग. ग्रैंड हॉल में लड़ रहे हैं ब्रो. भैंस की आंख. इस साइड हम शायद कभी गए नहीं हैं. यहाँ ये लड़ रहे हैं ओमिनस और वो. ओमिनस और सेबेस्टियन दोनों स्लिदरिन गए हैं. तो आई बिलीव हम जहाँ जा रहे हैं वहाँ स्लिदरिन कॉमन हाउस होगा. चुगली. अरे भाई पूरा हैलोवीन बनाया हुआ है रे. पूरा हैलोवीन थीम है इधर. मुझे लग ही रहा है. Handy resource indeed, your field guide. वाइडक्ट कोर्टयार्ड. ये भाई स्लिदरिन वालों का है क्या कुछ? हैलोवीन थीम क्या ये अपडेट के बाद हुआ है? यहाँ कभी आया नहीं. ड्रेको माल्फाई, ड्रेको डॉर्मिनस, ननक्विन और रेवेलियो. इसमें पढ़ेंगे ना क्या लिखा. तो हॉगवर्ट्स. अच्छा ये हॉगवर्ट्स का क्रेस्ट है. ठीक है. The Hogwarts coat of arms include a lion, snake, eagle, and badger, representing the 4 houses. Draco Dormiens Nunquam Titilandus means never tickle a sleeping dragon. Okay, I would never tickle a sleeping dragon. I'll keep that in mind. इधर कुछ है दरवाजे के पीछे. ये क्या है? साइड क्वेस्ट है क्या? साइड क्वेस्ट है. सुबह आएगी. अच्छा यहाँ तो हम आए हैं यार. ये वही जगह है. Students always run when Peevesy wants to have some fun. Lumos. ये किसी क्लास का है. अरे चुप रे. कान में चिल्ला रहा है. वो मैं अपनी सेरेमनी के बाद पहली बार आया हूँ यहाँ पे. Revelio. सॉर्टिंग सेरेमनी पर. दिस अरे यही तो है. यही तो वो जगह है जहाँ वो उसमें था. तो अभी चलेंगे. द इंचेंटेड lectern serves as a spot for which the great headmaster and headmistress, his headmistress and headmaster of Hogwarts, as well as Professor Black, address to the school. Okay, हमें वहाँ मिल गया है. आजा बेटे. चलो लेट्स गो. ये भाई कुछ तो आवाज आई थी गंदी सी. गायब हो जाएगा. How nice to see you, my young friend. This is the Great Hall. Revelio.
और यहाँ पे भी कुछ है भाई, यही बताएगा यहाँ पे खाना खाते हैं। The ceiling of the great hall has been bewitched to mimic the sky above the castle. Okay, this is the current sky right now. Okay, bewitched हुआ है यहाँ पे. Anything to do with the dark art should be avoided. It's too risky. Anything to do with Salazar Slytherin is worth the risk. Oh. I can't agree. And I'll not say a word more. I'm sorry. I won't give up. ये भाई सैलाज़ार स्लिदरिन के वंशज है, प्योर ब्लड है ये बंदा। और एक और बात बताऊं, इसका नाम है गॉन्ट। ये जो है गॉन्ट जो है उसकी माँ का नाम था। वोल्डेमॉर्ट जो था ना हमारा मेल विलन हैरी पॉटर का, उसकी माँ का नाम गॉन्ट था। तो मोस्ट प्रॉब्ली वो इसी की फैमिली ट्री से है, गॉन्ट। और उसके बाप का नाम था रिडल, सरनेम। What were you and Ominous speaking about? He's being ridiculous. Apparently Salazar Slytherin had a secret scriptorium here in Hogwarts. Ominous swears it was used for the dark arts, so he wants nothing to do with it. I reminded him that Anne needs a cure. This scriptorium could hold the answers we need. अरे क्या डेंजरस सीखना है भाई। The dark arts do pique my interest. There's more to dark magic than people realize. The Gaunts know this better than most. Perhaps I've spoken out of turn. Ominous's family history is personal to him. अरे हमको बताओ, शायद हमने पहले ही पता कर लिया है कि प्योर ब्लड है और ये सब है, लेकिन बताओ हमें। I'd like to know more about it if you wouldn't mind telling me. I won't repeat it. Very well. But do keep this between us. Definitely. Ominous learned dark magic from his parents. Oh. Are you familiar with the Cruciatus curse? पीड़ितो। अगर जो लोग हिंदी में देखते हैं हैरी पॉटर या देखी होगी कभी, तो पीड़ितो भाई डार्क डिफेंस अगेंस्ट द डार्क आर्ट्स में एक उस पे मारता है, एलिस्टर मूडी मारता है शायद। एक स्पाइडर होती है, उस पे मारता है क्रूशियाटस, पीड़ितो। Crucio, correct? The Cruciatus curse. Crucio. Also known as the torture curse. Inflicts excruciating pain on the victim. Apparently, his parents and older siblings had no qualms about casting it on muggles for sport. Ominous described the sound of the victim's cries as horrific, so the first time he was asked to cast it himself as a child, he couldn't bring himself to do it. As punishment, his family cast it on him. The anguish was so bad that when asked to cast it again, he relented. I have repeatedly assured Ominous that he did what he had to, but he still hasn't forgiven himself. अरे यार कैसे लोग हैं यार, इसके माँ बाप इसी पे क्रूशियाटस कस मार दिया यार, ओमिनस पे। ओमिनस इज अ गुड गाय, इट्स फील्स, बट द पेरेंट्स आर नॉट गुड। और याद होगा आप लोगों को जब एलिस्टर मूडी मारता है क्रूशियाटस कर्स, तो ये गुस्सा हो जाती है एमा वॉटसन हमारी, हरमाइनी। He had no choice. He should have known better. एलिस्टर मूडी पूछता है 3 कर्सेस के बारे में। तो पहला होता है क्रूशियाटस, दूसरा होता है इम्पीरियो, और तीसरा होता है अवाडा का डाबरा। तो क्रूशियो मारता है, फिर वो सब मारता है। वो सीन बहुत मतलब कुछ अलग सीन है वो। देख मतलब अगर मूवी देखोगे तो उससे पता चलता है कि भाई जो कर्सेस हैं क्यों बैन है, मतलब कोई भी विजर्ड और विच इन कर्सेस को क्यों नहीं यूज करता है। He had no choice. He should have known better. He had no choice. How horrible. Poor Ominous. He was only a child. He shouldn't blame himself. After that incident, the rift between Ominous and his family only grew. That is until I came along. Every moment he isn't at Hogwarts, he's with us in Feldcroft. Ominous trusts me. And more often than not, he winds up listening to me. I'll remind him of that when I follow up about the scriptorium. Watch for my owl. I'll have news soon enough. Okay. I'll make Ominous understand. He'll change his mind. Okay.
तो मुझे ऐसा फील हो रहा है कि हम कोई कर सीखने वाले हैं और हमको चाहिए आवाज आकर डाबरा। कौन सा लेवल है? लॉक। अरे लेवल 1 है। लॉक खोल देते हैं इसे। Mine now, demi guys. एक और डेमी गाइस मिल गया हमें। Revelio. अरे यार हमको वो मिली है, प्लेट जंपर टायर। और भी कुछ है क्या? ये किसका रूम है ये? या ये रूम ऐसे ही है बस? हेडमास्टर का। भाई कुछ तो बहुत खराब सी आवाज आ रही है। मतलब कोई कुछ ढूंढना मतलब कुछ है जो ढूंढवाना आ रही है ना? तुम लोग को भी आ रही होगी, पता नहीं ब्रो। हंस हो सारा पीछे है क्या इसके? कोई और है? छोटा मोटा कर लेते हैं जल्दी से कोई क्वेस्ट वेस्ट, क्योंकि मेन क्वेस्ट तो अब कल करेंगे, बड़ी वाली जो कोई भी होगी। मुझे लगता है सारी मेन ही बची हैं। तो एक काम करते हैं, सीधे चलते हैं रूम ऑफ रिक्वायरमेंट में। अच्छी नहीं लग रही ना? थोड़ी बहुत अच्छी लग रही है। वो ये तो बहुत प्यारी लग रही है ब्रो। यही लगाएंगे हम अपनी वॉन्ड पे। ऑफेंस बढ़ रहा है बट रूम ऑफ रिक्वायरमेंट में चलते हैं फटाफट। थोड़ा बहुत कुछ देखते हैं क्या क्या कर सकते हैं। कुछ कुछ उगाना होगा उगा सकते हैं। आई थिंक वो हो गया होगा। बिगिन बिल्ड। हार्ड ग्रास। गियर ना? ओके। इंक्रीज डैमेज टेकन फ्रॉम इन्वेंट्री में क्या क्या है? अच्छा ये मिला है हमें, लेटर वगैरह मिले थे आज सारे। और फ्लक्सवीट सिम। टैलेंट्स हम कुछ कुछ ले सकते हैं यार अब। वो ये लेंगे भाई, ये लेंगे। इसमें तो ये लेंगे। डार्क आर्ट्स में देखते हैं क्या क्या है हमारे पास।
अच्छा वो कर्स हमारे पास आए नहीं है लेकिन स्टूपिड स्टनिंग कर्स स्टूपिफाई द सेम कर्स ये ले लेते हैं। स्टूपिफाई करेंगे तो कर्स आएगा सीधे फटाक से, ये नहीं यूज करूंगा मैं ज्यादा। डिसआर्मिंग कर्स ये क्या है? स्लोइंग है। Whoa. वीगन वर्ल्ड तो सही काम है। ओ भाई साहब प्रोटेगो मास्टरी चाहिए थी, ये क्यों ले लिया? दोनों बेकार ले लिए मैंने। इसकी तो नीड नहीं है। रूम ऑफ रिक्वायरमेंट में क्या है? वेनमस टेंटिकुला ठीक है। इन सब का तो क्या ही यूज है, इतना तो ज्यादा मैं पोशन यूज भी नहीं करता, तो रहने देते हैं इनको। और इसमें क्या क्या है हमारे पास एक्स्ट्रा? और भी कुछ है क्या? ब्रूम्स नहीं मिली यार, ब्रूम्स वाला नहीं हो रहा है बहुत दिन से। हमने ये कब मिला रे हमको? मीजल्स 20 डेंस भी जाना पड़ेगा मुझे लगता है। और इसमें कुछ कुछ मिला होगा यार। ओ कुछ तो मिला। लाइटनिंग स्विफ्ट ब्रूम मिली, ब्रूम मिली, ब्रूम मिली, ब्रूम मिली, ब्रूम का वो मिला। अरे नहीं, अरे यार will make a travel a breeze। और कुछ मिला था ना मुझे।
नॉट श्योर क्या मिला था। ठीक है भाई लोग, अभी तो हमारे पास ठीक ठीक हो गया है ना। ऑल्सो फील्ड गाइड के पास टोपी मिली है। रूम ऑफ रिक्वायरमेंट में क्या मिला है? बिली बिलीविग हाइव स्पेलक्राफ्ट। बिलीविग हाइव क्या होता है? व्हाट इज बिलीविग हाइव? अरे यार मेरे वाले ने कपड़े चेंज कर लिए हैं। बिलीविग हाइव, व्हाट इज बिलीविग हाइव? देख लेते हैं एक बार फटाफट। शायद यहाँ नहीं होगा वो। बिलीविग हाइव बिलीविंग है नहीं मेरे पास, बट मैं पता नहीं क्यों लगा रहा हूँ इसे। और क्या क्या कंजे कर सकते हैं ब्रो? लॉक्ड है। Nick thinks you should be proud of all the potions you've brewed. ठीक है भाई लोग, तो कल अपन स्ट्रीम करेंगे। कल क्या क्या करेंगे देखते हैं। कल हमारा हाई कीप है एक तो विंगार्डियम लेवियोसा हमारे पास है ऑलरेडी। अच्छा रिक्वायरमेंट्स हैं, ओके। आई हैव विंगार्डियम लेवियोसा and attend its astronomy class. I should head there now. ये मेन क्वेस्ट है तो लंबी होंगी, कल करेंगे इनको। डेमीगाइस हॉगवर्ट्स में हमें और ढूंढने हैं, ठीक है। तो नेटी और एस्ट्रोनॉमी क्लास कल करेंगे, ठीक है। अभी के लिए गेम को करते हैं बंद, सेव कर लेते हैं। सेविंग इज इम्पोर्टेंट। हमने टोटल 19 आवर्स गेम खेला है अभी, सही चल रहा है, धीमे धीमे कंप्लीट हो जाएगा यार। ना ज़्यादा समय भी नहीं लगेगा और धीमे धीमे हम गेम को कंप्लीट कर लेंगे। तो भाई आज के लिए गेम यहीं पे बंद करते हैं, कल मिलेंगे, कल दोबारा खेलेंगे, कल बहुत मज़ा आएगा वापस से। तो आज के लिए स्ट्रीम करता हूँ मैं बंद अभी के लिए। बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट स्ट्रीम टुमारो। और हॉगवर्ट्स लेगेसी कंटिन्यू करते हैं एंड तक।